We have been discussing about the forces in the previous lecture, right? And just to give you an idea, what we've been doing so far is that we talked about the equilibrium of forces, and I told you guys that if you have three forces, right, if they are in equilibrium, they are going to form a closed triangle, right? This is what we saw, that it forms a closed triangle. उससे हम आगे चलेंगे आज. मैं आज आपको कुछ forces जो एक plane के अंदर act कर रही होती है उसके बारे में बताऊंगा, that their line of action when they meet the object is in equilibrium. We talk about that. ठीक है? और उसके बाद हम जाएंगे लेटरल प्रॉब्लम्स पे और फिर हम मूव करेंगे डेंसिटी पे. अगर आपके पास एक स्लोप है, फॉर एग्जांपल, if you have a slope like this, which is, ये आपके पास एक inclined plane है, ठीक है? This angle is theta, and I told you guys that if you have an object here, for example, there is a car, for example, the weight is acting here, which is mg. This angle here is theta. I proved it. You can watch the video again. ठीक है? I also proved it in the class. हमने बहुत इस पे काम किया था. किसी ने reinforce करना है तो वो जाके उसको दोबारा देख ले. अच्छा, this is mg cos theta. This one is angle के बिल्कुल opposite. It's mg sin theta, right? अब अगर ये forward force लग रही है इसकी यहाँ पे एक forward force, which is F, और जो frictional force है उसको मैं कह देता हूँ frictional force और drag. Frictional force plus drag force is, let's call that force F, right? Let's call that force collectively as F. इसके जो इस तरफ force लग रही होगी ना, ये वाली, due to the component of the weight, what is that? That is mg sin theta. Because mg sin theta is acting here, so mg sin theta will also act here. Yeah, it's parallel to the slope. It is parallel to the slope. Now, according to Newton's second law, you should know that the resultant force is always equal to mass into acceleration. ऐसे ही है. अच्छा, यहाँ पे इस केस में अगर ये इक्विलिब्रियम में है, if it is at equilibrium, if it is at equilibrium, it would be moving at a constant speed or it would be at rest. ठीक है? अगर ये constant speed पे drag होगा तो speed पे move कर रहा होगा obviously. If it is at equilibrium, then what's going to happen is that acceleration is going to be 0, and the resultant force is what? The resultant force is, that is 0. That resultant force is 0, but the resultant force is given by the expression forward force minus backward force. ये मैं बता रहा हूँ. वैसे 0 है, but forward force minus backward force is the resultant force. This is the resultant force that we have, and I can write this resultant force as 0 because acceleration is 0. Now you should know by all means that the forward force is what? That is, in this case, it is, I'll call this forward force minus backward force is equal to 0. The forward force is F. The backward force is mg sine of theta plus the frictional force F, that is equal to 0. Frictional and drag मैंने सब कुछ कर दिया, right? And this becomes what? This becomes forward force F is equal to mg sine theta plus F. So you get an expression like this. And here the object is in equilibrium, which means that it is moving at a constant speed. Here the object is in equilibrium.
Is that clear, ji? Moving at a constant speed. If it is at rest, then there is no drag force, but there is friction involved. Friction तो होगी. Is that clear, जी? तो ये आपको इसका आइडिया होना चाहिए. इस क्वेश्चन आया समर 19 में पेपर 1 2 क्वेश्चन 14. समर 19 देखिए ना, ये फॉरवर्ड फोर्स है, ठीक है, ये रेजिस्टिव फोर्स एफ है. अच्छा, यहाँ पे जिसका वेट mg है, तो इसका कंपोनेंट बन रहा है यहाँ पे mg sin थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा. अब दिस रेजिस्टिव फोर्स एफ, दिस फॉरवर्ड फोर्स, इसको जो आप मर्जी कह दें, इसको आर कह दें, R is equal to F plus mg sin theta. Is that clear? उसके बाद हमारे पास आते हैं इक्विलिब्रियम में एक और चीज, that in equilibrium we have, for example, I have an object like this. One force is acting here. One force is acting here. And we have one force which is acting here. If I ask you whether it is in equilibrium or not, is it in equilibrium? Do you think it is in? Why? Why do you think it's not in? तो कह रही है. अगर बेटे आप इसको एक्सटेंड करें ना बैकवर्ड्स, तो ये तीनों जाके एक सिंगल कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं. इसका मतलब है अगर ये पिवट है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है पिवट से. इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट से 0 है. इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट से 0 है. तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि उसके रिजल्टेंट मोमेंट 0 हो गया. इट्स नॉट मूविंग, इट्स नॉट इन मोशन, राइट? सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, यू एक्सटेंड बैक its line of action of forces, and if the line of action of forces they meet at a common single point, that means that object is in equilibrium. If it meets at a common single point, that means that it is in equilibrium. Otherwise, it's not. So, if an object is in equilibrium, what is happening is the line of action of forces should pass through a common single point. It should pass through a common single point. And that assumes that the object is in equilibrium. I have a force here. These are the coplanar forces. एक प्लेन के अंदर फोर्सेस एक्ट कर रही है. कोप्लेनर फोर्सेस हैं ये. इसको मैं लिख देता हूं कोप्लेनर फोर्सेस. एक प्लेन के अंदर है, ठीक है. कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग इन इक्विलिब्रियम, राइट? व्हाट, इन व्हिच इट इज इन इक्विलिब्रियम? सी. वेरी गुड. क्योंकि आप इसको एक्सटेंड करें, इसको एक्सटेंड करें, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में नहीं है. तीनों एक ही पॉइंट से पास नहीं कर रही. इसको एक्सटेंड करें, इसको एक्सटेंड करें, ये भी, हाँ, इसको एक्सटेंड करें, तो ये एक ही कॉमन सिंगल पॉइंट पास है. आंसर इज सी. वेरी गुड. समझ आ गई? इट्स अ पीस ऑफ केक इफ यू नो द कॉन्सेप्ट. क्या आंसर है जी? बी आंसर है, बी. आप एक्सटेंड करके देखिए करें बेटा. इसको एक्सटेंड करें, इसको करें, ये तो नहीं पास करें. इसको एक्सटेंड करें, इसको एक्सटेंड करें, नहीं, ये इधर जा रही है बल्कि इस तरफ. और ये आप देखें तो ये भी बिल्कुल नहीं कर रही. हाँ, इसमें आप देखें तो इट इज पासिंग थ्रू अ कॉमन सिंगल पॉइंट. एग्जैक्टली. रूलर लेके कीजिएगा, रूलर से कीजिएगा, उससे ज्यादा बेहतर आपको. लेटर प्रॉब्लम्स, इसको बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि इसका सवाल आ जाता होता है. आपके पास ये एक वॉल है, ठीक है. फॉर एग्जांपल ये एक रफ वॉल है जिसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व है. रफ वॉल, रफ का मतलब है फिजिक्स में फ्रिक्शन, स्मूथ का मतलब है देयर इज नो फ्रिक्शन. This is what you should know in physics. So there is a wall here. This is rough.
I have a ladder here which is resting against this wall. This is the ladder that I have. And I have the weight of the ladder acting here. The weight is acting here, which is mg. The natural tendency of the ladder is to fall. मतलब ऊपर तो नहीं जाएगी ना, नीचे ही आएगी ना, गिरेगी ना नीचे. ये नेचुरल उसकी टेंडेंसी है. जब वो नीचे गिरेगी तो यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन आएगी. ये फ्रिक्शन है, क्योंकि रफ वॉल है तो फ्रिक्शन आएगी ऊपर की तरफ. नीचे गिरेगी तो फ्रिक्शन ऊपर आएगी. और एक आएगा आपके पास रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे कहते हैं. ये नॉर्मल और रिएक्शन और फ्रिक्शन का एक रिजल्टेंट आता है, उसको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स. इस नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का एक रिजल्टेंट आता है, उसको हम कहते हैं, ये कांटेक्ट फोर्स को ही आपने देखना है. असल चीज कांटेक्ट फोर्स है. असल चीज हमेशा कांटेक्ट फोर्स है. अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कांटेक्ट फोर्स असल में नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगा. अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कांटेक्ट ही नॉर्मल रिएक्शन है. लेकिन यहां पे आपने, दिस इज नोन एज द कांटेक्ट फोर्स. अच्छा, यहां पे भी ये फॉल करेगी. यहां पे तो कोई फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि इट्स अ स्मूथ फ्लोर, smooth surface. So only a force which is acting is normal reaction, which is the contact force. This is normal reaction, and this normal reaction is the contact force here. हाँ जी, वही कांटेक्ट, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं. अच्छा, अब अगर आप मेन फोर्सेस ये वाली हैं आपके पास, एक ये और एक ये, अगर आप इनको एक्सटेंड करें तो क्या ये मीट करती है एट अ कॉमन सिंगल पॉइंट? नो. दिस मींस दिस ladder is not in equilibrium. This ladder is, yes, it will fall. And will begin to slide since the line of action of force, since the line of action of forces do not meet. So it is not in equilibrium. This ladder here is, this ladder is not in equilibrium because the line of action of forces are not meeting, and there is friction, but there is no friction at the bottom. It is going to slide. किसी एक पॉइंट पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस नहीं मीट कर. अच्छा, अब हम बात करते हैं जब आपके पास आ जाता है दोनों स्मूथ नहीं, दोनों रफ आ जाते हैं. स्मूथ दोनों आएंगे तब तो बिल्कुल भी मीट नहीं करेंगे, वो तो है ही नहीं इक्विलिब्रियम. अब आपके पास दोनों रफ आ जाते हैं सरफेसेस. I have two rough surfaces here, and in this case what is happening is we have here a rough wall and we have a rough surface at the bottom of the floor, and this is what the ideal case is usually. As असल में जिंदगी में रियल लाइफ में तो ऐसे ही है. यहां पे आपके पास एक ladder है like this, this is rough wall, rough surface. This is also a rough surface. We have here the weight which is acting here. ये आपका यहाँ पे लैडर का वेट है. लैडर की नेचुरल टेंडेंसी क्या है? इससे नीचे जाना है. फ्रिक्शन एक्ट करेगी ये है, हाँ जी, ये फ्रिक्शन है. दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन. जो इंपॉर्टेंट फोर्स यहाँ पे क्या है वो है
contact force. This is the contact force which matters the most. This contact force is here. अच्छा, यहाँ पे भी रिएक्शन फोर्स जो होगी वो आपके पास रफ सरफेस पे आएगी इस तरह से. अच्छा, इसकी नेचुरल टेंडेंसी है इसने लेडर ने राइट साइड पे फॉल करना है, तो फ्रिक्शन आएगी यहाँ पे. This is the friction. This is the reaction, and the contact force is going to be the resultant of this. This is the contact force. If I extend all of these forces, the weight, this, you're going to see that all of them are going to pass to a common single point. The weight, the line of action of weight, the line of action of this contact force, the line of action of this contact force, they're going to pass through a common single point. And that indicates what? That this ladder is in equilibrium. Physics works. The ladder is in equilibrium since the line of action of all forces are passing through a common single point. Single point. Is that clear? It passes through a common single point, and since ladder is in equilibrium. Let's do a question on this. आपको उन्होंने P और Q दोनों रफ वॉल और रफ ग्राउंड है. आपने बताना है कौन सी, ये आप देख लेंगे तो ये रफ वॉल है और रफ ग्राउंड है. एक दफा पढ़ ले क्वेश्चन को. ये देखिए ये Q है, इसकी नेचुरल टेंडेंसी इसने यहाँ जाना है, इस तरफ जाना है, तो फ्रिक्शन का एक्ट करेगी यहाँ पे, रिएक्शन यहाँ पे, कांटेक्ट फोर्स आएगी ये, तो Q की फोर्स ये है. ठीक है, P का ऊपर नीचे आएगा, फ्रिक्शन यहाँ एक्ट करेगी, रिएक्शन यहाँ एक्ट करेगा, P होगी. ठीक है, वेट ये एक्ट कर रहा है. अगर ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो P, Q और वेट दे शुड फॉर्म अ क्लोज ट्रायंगल. दिस Q, दिस P and this W should form a closed triangle. Closed triangle का मतलब ये है, अगर आप गौर करें तो ये Q इस तरफ एक्ट कर रहा है, Q है आपके पास, ये आपके पास P है इस डायरेक्शन में देखें, और वेट ये एक्ट कर रहा है. It's forming a closed triangle. No, you can't do. Sorry. ठीक है जी, क्लियर है? It's gonna form a closed triangle. Right? This question came in November 18, paper 1-1. Wall आपके पास frictionless ground है और wall rough है. B आंसर है B. क्योंकि wall rough है और ground frictionless है. देखिए लिखा होगा. ये मैंने आपको भी करवाया था. ग्राउंड की तो रिएक्शन फोर्स यही है ना, ये फ्रिक्शनलेस है और ये फ्रिक्शन है यहाँ पे. ये फ्रिक्शन यहाँ पे है तो ये रिएक्शन था, तो ये कांटेक्ट फोर्स थी. ये यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो जो रिएक्शन है वही कांटेक्ट फोर्स है. तो ये देखिए इसका आंसर यही होगा और कोई है नहीं. बाकी में ऐसा नहीं हो रहा. ये यहाँ पे ये अजीब है. यहाँ पे नीचे फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे फ्रिक्शन, नीचे फ्रिक्शन नहीं है. फ्रिक्शन नहीं है तो ये नहीं होना चाहिए. ठीक है जी, तो physics will work. Density, what is density? Density can be written as mass over volume. इसको हम symbols में लिखते हैं. Rho is equal to, rho is a density, this is m over v. We write it as symbols. The mass is measured in kilogram in SI units, the volume in meter cube. So the SI units for density are
kilogram m-3. The other units of density are gram per cm cubes. Other units होगी 1 gram per cm cube is equal to how many kilogram per meter cube? 1000 kilogram per meter cube. अगर आपके पास एक हाँ जी वो मीटर क्यूब में नीचे रेज़ टू पावर बहुत ज्यादा आ जाता है 10 रेज़ टू पावर वो नीचे ऊपर जाके हो जाता है 1 ग्राम को किलोग्राम में करें तो 1/1000 करते हैं 1 सीएम क्यूब को मीटर क्यूब में करें अगर 1 सीएम को आप मीटर में करें तो 1 सीएम क्यूब 1 into 1 into 1 is 1/100 into 1/100 into 1/100 तो ये हो जाएगा 1/10 raised to power 6 ये हो जाएगा 1/10 raised to power 3 divided by 1/10 raised to power 6 and physics will work always along with math. ठीक है so 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब is equal to 1 gram per cm cube. अच्छा अगर आपके पास एक स्फीयर है ऑफ रेडियस r इसका मास m है तो इसकी डेंसिटी किस तरह निकालेंगे वॉल्यूम और वो मास करने के लिए